contribution plan. So what is defined contribution plan? In this plan, employer make contribution in fund organization on behalf of the employee. Okay, after this employer will not have any obligation to pay to the employer. तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो फिक्स कंट्रीब्यूशन करेगा फंड ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद फंड ऑर्गेनाइजेशन फिर लायबल होगा एम्प्लॉई को पे करने के लिए. Okay, so let's understand this concept with an example of PF. So what is PF? PF is a provident fund. Okay, so government wants ki the employees who are earning like up till 15,000 per month, they should also do some kind of investments and savings to secure their retirement. Okay, so for that reason government has made compulsion to the companies, okay, um, to make the PF contribution. Okay, so employer have to make 12% of the basic, and then that 12% is divided in this both. Okay, and then also employee will have to make this much contribution, and whatever the PF which is liable to be paid to the EPFO should be deposited within 15th of the next month. So how we will going to make entries for this will be like, first we'll going, so here we will going to record employee share. Okay, so when we are debiting the salary of employee, at that time only we will going to make employee PF payable ka liability, and then salary payable. So here it will be net salary deducting PF amount. And also we have to make contribution, right? So we will going to record our expense then. Okay, and when we are paying this PF amount, then this liability will be reversed. Okay, सो द एम्प्लॉयर का जो यहाँ पे शेयर है ना वो सीटीसी में इंक्लूड होता है. ठीक है, सो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. एंड इवन दो हम जब ऑडिट के लिए जाते हैं पेरोल का, तब हमें ये देखना होता है कि पीएफ की लायबिलिटी कितनी आएगी ये एम्प्लॉय को, और जितना लायबिलिटी बुक किया है उतना पेमेंट हुआ है कि नहीं. सो वी चेक चलान, फिर चलान रिसीप्ट, मतलब पेमेंट रिसिप्ट वी सी. सो वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, और हाँ, एम्प्लॉयर का जो शेयर होता है ना वो हमारे सीटीसी में भी इंक्लूड होता है. ठीक है, वो ऐसा होता है कि आपका बेसिक, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका जो बेसिक है वो 30,000 है, तो 30,000 का 12% होता है 3,600. तो आपका जो सीटीसी है वो ऐसा आएगा कि बेसिक 30,000, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ 3,600, एंड टोटल करके आएगा 33,600 आपका टोटल सीटीसी. ओके, और जो एम्प्लॉय का जो रहता है उनको तो नेट मिलता है फिर सैलरी, उनका जितना भी बेसिक पे जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो फिर हम लोग लेस करके उनको पे करते हैं सैलरी. ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है. अभी यहाँ पे हम लोग इसकी एंट्री कैसे करेंगे? पहले तो जितना भी हमें पे करना है उसको हम लोग उस वो एक्सपेंस हम लोग अक्रूड करेंगे. ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट करेंगे कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस अकाउंट टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेएबल, एंड व्हेन वी आर पेइंग दिस लायबिलिटी वी विल गोइंग टू रिवर्स दैट लायबिलिटी. इन केस ये जो कंट्रीब्यूशन प्लान है, अभी देखो यहाँ पे तो जो है हमें नेक्स्ट मंथ हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं, बट ऐसा कोई है जो कि हमें पे करना है आफ्टर 12 मंथ्स, बट उसके लिए हम लोग अभी से, मतलब जो हम लोग 12 मंथ्स बाद पे करने वाले हैं ना, उसके रिलेटेड सर्विस हम लोग अभी से ही ले रहे हैं एम्प्लॉय से. ओके, कोई कोई कंपनी करती है अपना खुद का भी कंट्रीब्यूशन प्लान लेके आती है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए. तो अगर वो 12 मंथ्स के बाद पे हो रहा है, बट हम लोग वो एक्सपेंस अभी से ही अक्रू कर रहे हैं, तो वो केस में हमें वो पीवी पे शो करना पड़ेगा. ठीक है, उसका जो भी प्रोविजन होगा, जो भी हम लोग अक्रू कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, और फिर वो प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोग इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे. SL Limited provides lump sum remuneration upon retirement to its employees. Remuneration is paid out of the fund to which SL Limited contributes 12% of annual gross salaries. So SL Limited will going to give remuneration to its employees on the retirement, and for that purpose it is contributing 12% of gross salaries to the fund. Okay, they are contributing
this much percent of amount to one fund. Contribution are made twice a year. So this contribution as limited will going to make twice in a year. So one is in November and another contribution will be made in June after the financial year end. Okay, and then they have given the gross salary which is 50 crore. Contribution made by ASL Limited in November 2020 was 2.8 crore. So first we can easily identify. First we're going to see how much is the total liability, and among the total liability already this much amount is being paid in November. So we'll calculate the balancing figure which we have to pay in a June, and that amount will going to be liability for us as on 31st March. Okay, so this is very easy question. Remuneration depends on the number of, okay, this is not that important. And then we have to show okay how should this transaction appears in the financial statement, and we have to show the journal entries and the accounting statement. Let's do this. Okay, so first the annual salary is 50 crore, okay, of the employee. Okay, the 50 crore will not be of single employee. All employees gross salary will be 50 crore, and among that 50 crore contribution we have to make in a financial year is 50 crore ka 12%, which is 6 crore. Among the 6 crore in November we have already paid 2.8 crore. So in June, okay, next financial year we have to pay this much amount. Okay, so we will make journal entry like this, because this is our defined contribution plan total expense. This much amount we have paid 2.8 crore, and this much amount we have to pay in June as on 31st March. So we will show it as a liability as on 31st March, and then we will going to reverse in June. Okay, Cisca Private Limited has an head count of 1000 employees. As per the company's policy, employees are given 35 days of privilege leaves, 15 days of sick leaves, and 10 days of a casual leaves. Okay, and out of the total paid leave and sick leaves, some of these leaves, 10 paid leaves and 5 sick leaves, can be carried forward to the next year. Okay, on the basis of past trend, it has been noted that 200 employees will going to take 5 days of paid leaves, 2 days of sick leaves, and 800 employees will going to avail 10 days of paid leaves and 5 days of sick leaves. Okay, and there is no other information in the question which is given for the leave compensation. So we directly read this line: what will be the treatment for short term compensating absence? Okay, so first we're going to see this part of the question. So see here, they have not mentioned how much there is a total salary of the employee, so we will going to directly, so we cannot calculate salary per day. ठीक है, so we will directly going to calculate the total days for the leave compensation. So here see, they have mentioned कि 200 employees will going to take 5 days of paid leaves, and 800 employees will going to take 10 days of paid leave. So this will be the total days for the leave compensation liability. Okay, and for sick leaves, they have mentioned in the question that 200 employees will going to take. So in that way we're going to record the liability days. Okay, okay, next part. Also, company has been incurring profit since 2020. It has decided in 2020-21 to distribute the profit to its employees at the rate 4% during the year. However, due to employee turnover, organization, and the expected payout of the Cisca Private Limited is expected to be 3.5%. Okay, so in first lecture we have already discussed the concept of profit sharing plan. So here company offers employees to give a bonus. Okay, if employees is helping company to reach certain profit um, aim. Okay, so employees to give motivation to employees and to make employees to work hard, company give this kind of
benefits to the employees. Okay, and for that purpose, company announced that employees will going to get share in the profit of the company. Okay, so that is profit sharing plan. But company sometime reduce the rate of the profit sharing because there is an employee turnover. Okay, so for that reason company reduce the rate for the profit sharing. Okay, so first the rate was 4%, and because of the employee turnover, then company has reduced the rate to the 3.5%. Okay, so we will make bonus provision on this rate. So 2000 crore is a profit which company has earned, and on that profit we will going to charge this rate, and we're going to calculate total bonus. Okay, then there is defined contribution plan. um First employment plan. Okay, so for defined contribution plan, company is making contribution of 100 crores, and this will going to fall due within 12 months from the end of the accounting period. Okay, so company have to make this contribution like within 12 months from the end of the accounting period. The company has paid 20 crore to this fund in 2021. इतना ऑलरेडी उन्होंने पे कर दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट का हम प्रोविजन बना लेंगे. So total expense is 100 crore, and to bank we have paid already. Let me show you full calculation. So this is the total contribution. 20 crore is already paid, and we are going to make 80 crore liability. Okay, so this is the journal entry we're going to pass. Okay, define benefits plan. So whatever the post employment benefits which we pay to our employee will going to be covered here. Okay, for example, gratuity. So what is the gratuity? Suppose employee is working for 5 years in the organization, then that employee will going to get a gratuity amount because that employee has served for this many year in the organization, and for as a gift company gave a gratuity to the employee. Okay, so how we will going to do accounting of this is that ki, first we will going to calculate total defined benefit obligation, how much there will be a total benefit obligation, and for that we will going to calculate total benefits. Okay, suppose now we have to pay to the employee gratuity on a fifth year end. Okay, so first we will going to identify, or we will going to estimate what will be his salary on a fifth year end. Okay, and suppose it is a 20 lakh, so I have told to employee that on 20 lakh we will going to give you 10% of gratuity, and as we have worked for the 5 years, it will be 5 as a number of years of service. So total employee will going to get 10 lakh of gratuity on a fifth year end. Now see, this 10 lakh is being given to the employee because that employee has worked for a 5 years. Okay, so the expense of 10 lakhs should also be divided among 5 years. Okay, so that we will going to do in the next step, benefit attributed to each year. So now we will going to recall our accrual concept. What accrual concept says, कि whatever the service we are receiving in any period, the expense related to that service should also be recorded in that period itself. Okay, so this amount is not only of the fifth year but altogether of the 5 years. Okay, so that's why we have divided that expense equally among 5 years. Okay, so per year we will going to record 2 lakh as a gratuity amount. Okay, so now see, this is the 2 lakh which is future value. Okay, so let's understand this with an example. So this is 2 lakh I will going to accrue for a 5 years. Okay, to pay to the employee on the end of the fifth year. Okay, so see, this entry I will going to make on a first year end. From here I will going to make entry of this. I will going to create payable. Okay, on a first year end. So from first year end to fifth year end, if we will count, then there is a 1, 2,
3 and 4 year. So here we're going to take 4-year PV factor but not of a 5-year PV factor. Okay, so this is little important concept, and concept to note it, that here we will consider 4 year because we are making entry on a year end. We are not making on the beginning of the year. Okay, so we will going to take 4, 3, 2, 1, and accordingly that we're going to take a PV factor and we will going to calculate a present value. Why present value? Because 2 lakh we are recording on a first year end. Okay, but 2 lakh is the amount we have to give on a fifth year end. Okay, so 2 year जो हमें फिफ्थ ईयर बाद देना है उसके आज की वैल्यू क्या है उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे ना, तो जिसकी वजह से हमें ऐसे इसको कैलकुलेट करना होगा। अभी इसको ये जर्नल एंट्रीज हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। अभी देखो, फर्स्ट ईयर में हम लोग अक्रू करेंगे इसको, करंट सर्विस कॉस्ट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन फर्स्ट ईयर का जो पीवी है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर सेकेंड ईयर एंड में हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस है उस पर हम लोग 5% का इंटरेस्ट ऐड करके इंटरेस्ट हम लोग ऐड करेंगे डीबीओ में। फिर सेकेंड ईयर एंड का जो करंट सर्विस कॉस्ट है जो कि है 1,72,600, वो हम फिर अक्रू करेंगे करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ। एंड देन थर्ड ईयर एंड में हम लोग पहले तो क्लोजिंग निकालेंगे कि डीबीओ का क्लोजिंग कितना है, वो क्लोजिंग कैलकुलेट करने के बाद उस पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, थर्ड ईयर एंड का। तो ऐसे करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन। एजे लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अ ट्रेडिंग ऑफ अ केमिकल। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से है। One of the employee benefit involves lump sum payment to the employee on a termination of the service and it is equals to 1% of the final salary। देखो उनको 1% मिलने वाला है, जो भी उसकी फाइनल सैलरी होगा उसका 1% उसको ग्रेचुटी मिलेगा। और सैलरी फर्स्ट ईयर की 10,000 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला है, एंड इज अज्यूम टू इंक्रीज 7% ईच ईयर। तो उसकी 7% से हर साल इंक्रीज होती जाएगी सैलरी। ओके, एंड वी हैव टू टेक डिस्काउंटिंग 10%। अभी ये चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी दैट। फॉर द एम्प्लॉय हु इज एक्सपेक्टेड टू लीव एट द एंड ऑफ द ईयर 5, तो उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल बेनिफिट्स जैसे हमने स्टेप वाइज देखा, तो हमें पहले फाइंड करना है कि टोटल बेनिफिट्स हमें कितना देना है एम्प्लॉय को। तो पहले उसके लिए क्या हम फाइंड करते हैं, एक तो पहले जो भी लास्ट फाइनल ईयर है उसका सैलरी कितना है टोटल, वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग का बेनिफिट परसेंटेज क्या है वो, एंड नंबर ऑफ ईयर्स हमें पता है 5, बेनिफिट परसेंटेज पता है 1। अभी हमें कैलकुलेट करना है फाइनल सैलरी। तो वो हमें बोला है कि वो ईयर 1 पे तो 10,000 है और फिर उसके बाद क्या होगी, 7% से वो इंक्रीज होगी हर ईयर। अभी देखो यहाँ पे हम लोग कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू of the salary, but we have to be careful that कि we have to take 4 years here, मतलब in this formula we have to do n minus 1, so in n we will going to put 4। Okay, because I have already explained that we are making entry on a first year end, so from first year end to, if you will calculate up till a fifth year, then it is coming 4 years। Okay, so that's the reason we're going to take 4, so this will be here 3। Okay, otherwise we could also do like this, 10,000 plus 10 plus 7% करके ऐसा, and calculating it for a 4 time, and then we'll get a salary, final salary which will be there on a fifth year। So ऐसे करके we will going to calculate total benefits to be paid, which is 655। Okay, so now we will going to distribute this among each year। Okay, because employee is serving for the 5 years, and each year we will going to record this expense, so for that reasons we will be going to divide it by 5। Now we will going to calculate current service cost P&L expense। Okay, so how first we will going to put benefit accrue to each year 131 like this way, and here as we have already discussed 4321 करके आएगा, not 543। Okay, and then we will going to take PV factor accordingly, and we will going to calculate present value। Now this also
in question they have told कि you have to calculate current service cost of each year and also closing balance of DBO at each year. Okay, so see, on first year we will going to accrue this current service cost which we have calculated over here. Then it will be our closing balance. Then in second year it will be our opening, and then on opening we will going to add our interest, then second year current service cost, and then we're going to get our closing balance. So for second year DBO closing balance is 196. Then it will be carry forward in the next year like this. Again we're going to add interest, current service cost, and then this will be closing. Okay, so same will be in fourth year, but in fifth year we have to be little careful because on fifth year हमें उनको पे करना है उनका जितना भी बेनिफिट है, और वो बेनिफिट हमने कितना कैलकुलेट किया था ऊपर 655. ओके, सो वॉट एवर द बैलेंस क्लोजिंग ऑफ फोर्थ ईयर विच इज this one we're going to take as an opening on a fifth year, and then we will going to record the current service cost, and whatever the balancing figure will be there, that we will going to show it as an interest expense. ओके, सो पहले हम ये लिखेंगे, फिर करंट सर्विस कॉस्ट को अक्रूड करेंगे, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जितना हमें पे करना है फिफ्थ ईयर एंड पे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग इंटरेस्ट में हिट करेंगे. ओके, अंडरस्टूड. In above example, we have seen that employee's final salary on fifth year is 20 lakh. But now that employee is performing very well, and now my estimation is changing. Now I'm thinking that this employee will going to get a huge salary increment in coming years. And I think so कि his salary in the fifth year will be 30 lakhs. Okay. So because of change in my estimation, नाउ माई लाइबिलिटी विल ऑल्सो डिफर. ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट की थी कि उसकी जो फाइनल सैलरी है फिफ्थ ईयर पे वो 20 लाख होगी, बट नाउ माई एस्टिमेशन इज चेंजिंग और मुझे लग रहा है कि 30 लाख होगी उसकी फाइनल सैलरी फिफ्थ ईयर पे. तो उसका देखो इम्पैक्ट क्या आएगा. अभी मुझे वापस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी यूजिंग दिस 30 लाख. तो उसके हिसाब से मेरी डीबीओ की लाइबिलिटी आएगी 4,19,000. बट मैंने कितनी बुक की है, ये बात हो रही है जब हम लोग सेकेंड ईयर पे खड़े हैं, ठीक है, और जहाँ पे 20 लाख को लेके 20 लाख एज अ फाइनल सैलरी लेके ऑलरेडी अकाउंटिंग हो गई है, और उसके बाद हम लोग का एस्टिमेशन चेंज हो रहा है. ये तब का केस है, ठीक है. तो हमने ऑलरेडी इतने अमाउंट का बुक कर लिया है डीबीओ. तो अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी मुझे लाइबिलिटी और बुक करनी पड़ेगी, तो उसको ठीक है, तो हमें लाइबिलिटी और बुक करनी पड़ेगी, तो वो हमारा हो जाता है एक्चुअल लॉस. तो अभी लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाएगा. ओके, अभी देखो ये सारा जो एस्टिमेशन होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअरीज करता है, ठीक है, और हम सिर्फ एक्चुअल का जो रिपोर्ट होता है वो हम कंसीडर करेंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड पे जनरली या तो क्वार्टर एंड पे होता है ये सब. ओके, so what we do is कि we compare actually, we see कि what is the liability as per our books of accounts of DBO, of defined benefit obligation, and what is the uh, defined benefit obligation amount as per the actuaries. Okay, so we compare this both liability as per actuaries and as per our books of accounts. So if we are finding that actuaries defined benefit obligation liability is more than our books of accounts, then we have to increase our liability, right? So we show it as an actuarial loss to DBO, and vice versa. If we are seeing that their defined benefit obligation liability is less and R is more, then we have to reduce our liability from books of accounts, and then we will show it as in gain. ओके, सो ये जो भी एस्टिमेशन होता है वो कौन करता है, एक्चुअरी करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और हम फिर कंपेयर करते हैं सिर्फ क्लोजिंग को, और उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. ओके, सो नाउ सी, अगर एक्चुअल लॉस हो रहा है तो हम लोग का लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, और एक्चुअल गेन हो रहा है तो हम लोग का लाइबिलिटी कम होगा. अभी जो भी एक्चुअल गेन एंड लॉस है, दैट बोथ विल बी बुक्ड इन OCI, other comprehensive income. It will not go to
profit and loss account, because profit and loss account is showing company's performance. So this gain and loss is having nothing to do with how business has performed. Okay, so India has told कि this gain and loss will be shown in other comprehensive income, so we have to mark this. Okay, now, so this types of wordings you will see in the question of actuarial gain and actuarial loss. So suppose if it is like due to the change in financial loss, due to change in demographic assumption, experience variance, okay, there is actuarial. So we will have to understand yes, because of this changing in estimation there will be actuarial gain or actuarial loss. Okay, so what kind of changes can be happen, like changes in estimation of expected salary, as we discussed in our example. Then there could be change in the number of years of service. हमारे example में 5 था, मे बी कोई कंपनी में ऐसा हो कि नहीं आप 3 years काम करोगे उसके बाद आपको ग्रेचुटी मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा चेंज हो गया उनके एस्टिमेशन में, ठीक है। फिर होता है डिस्काउंटिंग रेट, अगर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी एक्चुअल गेन एंड लॉस आएगा। अभी होता है पास सर्विस कॉस्ट। अभी देखो यहाँ पे जो है ना चेंज इन रेट वाला यहाँ पे कवर नहीं हुआ है। ओके, सपोज मेरी कंपनी, हमने हमारा जो एग्जांपल था उसमें मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला था कि आपका जो फाइनल सैलरी होगा उसमें मैं 10% आपको ग्रेचुटी दूंगी, बट नाउ माई कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एम्प्लॉयज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो नाउ I should increase this percentage. Okay, so मैं पहले 10% दे रही थी and now I've introduced कि I will going to give you 20%. Okay, and it could be vice versa. Now my company is not performing well, so I don't want to give this much gratuity to my employee, so I am reducing the rate to 5%. Okay, so this type of changing will lead to past service cost. Okay, so past service cost में जो चेंज इन रेट हो रहा है ना वो यहाँ पे कवर होगा। रिकॉग्नाइज पास सर्विस कॉस्ट ऑन डीबीओ ड्यू टू चेंज इन बेनिफिट परसेंटेज प्लान। ओके, तो अभी चेंज इन परसेंटेज की वजह से अगर वो प्लान बेनिफिशियल हुआ एम्प्लॉय को, तभी देखो बेनिफिशियल हुआ, अभी मैंने 10% से 15% किया तो ऑब्वियसली मुझे अभी उनको और लाइबिलिटी देनी, मतलब मुझे अभी उनको और अमाउंट देना पड़ेगा ना, तो जिसकी वजह से मेरा डीबीओ है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर वो 5% हो जाता है तो अभी तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना उनको, ठीक है, तो वैसे। फिर आता है पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब हम लोग अपनी लाइबिलिटी को रिवर्स कर देंगे। फिर आता है कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। अभी मेरी जो कंपनी है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, सो आई वाज लाइक कि यार इनको क्यों ही इतना ग्रेचुटी देना 10% का, और अभी मुझे ग्रेचुटी देना ही नहीं है इनको, बिकॉज एम्प्लॉय टर्नओवर भी इतना हो रहा है और कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सो आई हैव डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव ग्रेचुटी टू एनी ऑफ द एम्प्लॉय। मैंने बोला कि ठीक है, मैंने पहले तो आपको बोल दिया था, बट नाउ आई एम विड्रॉइंग माई वर्ड्स, एंड जो भी हमने अभी तक का जितना भी अक्रू किया है उतना हम लोग आपको दे देंगे। ओके, तो उसका फिर हम लोग ऐसे एडजस्टमेंट कर देंगे, हमारा जो भी डीबीओ है उसको रिवर्स कर देंगे, और उस पे जो भी लॉस या तो गेन बुक हुआ, जो भी लॉस और गेन हुआ रहेगा उसको हम सेटल कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लेजर शो किया है कि कौन से एंट्रीज की वजह से डीबीओ का बैलेंस यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे डीबीओ का बैलेंस कौन सी एंट्रीज की वजह से कम होगा। सेम इसको यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज प्रेजेंट किया है। करेंट सर्विस कॉस्ट से डीबीओ का बैलेंस इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट से इंक्रीज होता है, एक्चुअल लॉस से इंक्रीज होता है, वैसे। नाउ व्हाट इज प्लान असेट? प्लान असेट का मतलब क्या होता है कि देखो, मुझे पता है कि मुझे 5 years बाद अपने एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी पे करना है, तो मैंने भी सोचा यार कि मैं भी चलो कहीं पे इन्वेस्ट करके रख देती हूँ ताकि वो इन्वेस्टमेंट मुझे काम आए आफ्टर 5th year, जब मुझे एम्प्लॉय को देना है तो मैं वो इन्वेस्टमेंट से ही एम्प्लॉय को दे दूंगी और उससे मैं भी कुछ रिटर्न कमा लूंगी, ठीक है। तो ये होता है प्लान असेट कि मुझे जो लायबिलिटी पे करनी है फ्यूचर में उसके लिए मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करती हूँ। ओके, तो इसको भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू पे, इसका भी
मेजरमेंट हमें एक्चुअली करके देता है, उसे हमें कंपेयर करना होता है कि एक्चुअली के हिसाब से कितना है प्लान असेट का फेयर वैल्यू एंड मेरी बुक्स के हिसाब से कितना है, और वैसे ही हमें गेन लॉस बुक करना होता है इसमें भी। अभी देखो, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हम लोग असेट क्रिएट करेंगे, प्लान असेट टू बैंक करेंगे, ठीक है। फिर अभी हम लोग इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो जिस इंटरेस्ट रेट पे हमने डीबीओ का चार्ज किया है ना इंटरेस्ट, वही रेट सेम रेट को यूज करके हम प्लान असेट का भी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। अभी जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट का, जो भी ओपनिंग बैलेंस है ना प्लान असेट का, उस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी एक्चुअल गेन लॉस, ठीक है, फेयर वैल्यू पे हम लोग को मेजर करना है, कंपेयर करेंगे हमारे बुक्स के हिसाब से कितना है, एक्चुअल के हिसाब से कितना है। ओके, अगर मेरी बुक्स के हिसाब से प्लान एसेट कम है बट एक्चुअली के हिसाब से वो ज्यादा है, तो मैं अपने प्लान एसेट को बढ़ा दूंगी और जिसकी वजह से मेरा वो गेन हो जाएगा, और ये भी सेम ओसीआई में जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन वी आर विड्रॉइंग माय प्लान एसेट, तब बैंक अकाउंट टू प्लान एसेट हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक है। अभी देखो, हमें बैलेंस शीट में नेट डिफाइंड लायबिलिटी बतानी है। अभी इंडेस ने बोला कि आप एक ही ट्रांजैक्शन का, एक ही चीज का लायबिलिटी और असेट दोनों नहीं दिखा सकते हो, आप नेट करके दिखाओ, ठीक है। आपकी लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट आपने असेट भी क्रिएट किया है, तो आप दोनों को अलग अलग नहीं दिखाओगे, आप नेट करके दिखाओगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये जो लायबिलिटी है मेरी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, उसके अगेंस्ट मैंने असेट भी क्रिएट किया है, इन्वेस्टमेंट भी किया है, आई विल शो नेट लायबिलिटी एंड असेट इन बैलेंस शीट। अभी देखो, यहाँ पे है इफ नेट डिफाइंड असेट देन इट विल बी द लोअर ऑफ कैलकुलेटेड नेट डिफाइंड असेट्स और असेट सीलिंग। अभी असेट सीलिंग क्या होता है कि मैंने जो प्लान असेट में जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, उन्होंने बोला कि आप 20,000 तक का ही विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट मेरा एक्चुअल में जो प्लान असेट है ना, मतलब मेरा जो नेट असेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, मेरा 50,000 का आ रहा है, बट मैं विड्रॉ तो 20,000 तक का ही कर पाऊंगी। ओके, तो मुझे तो आइडियली जो है 20,000 पे ही बताना पड़ेगा कि मेरे पास तो इतना ही असेट है, ठीक है, पैसा। तो अभी वो चीज में भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे और वो भी हमें ओसीआई में शो करना है। इंटरेस्ट भी हम लोग नेट पे दिखाएंगे, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है डीबीओ का वो लेंगे, और जो भी हम लोग इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं प्लान असेट पे उसको लेस करके नेट इंटरेस्ट इन कॉस्ट या तो नेट इंटरेस्ट इनकम ही हम लोग शो करेंगे पीएनएल में। फिर हम लोग का टोटल पीएनएल में कौन सा एक्सपेंस बुक होगा, पहले तो हम लोग करंट ईयर का जो भी डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी जो भी होगा, करंट सर्विस कॉस्ट, वो हम लोग पीएनएल में शो करेंगे। फिर हम लोग का इंटरेस्ट की वजह से जो भी इनकम या तो एक्सपेंस हो रहा है वो हम लोग शो करेंगे पीएनएल में। फिर पास सर्विस कॉस्ट या तो फिर हम लोग का सेटलमेंट हो रहा है, कर्टेलमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो लॉस और या तो गेन आ रहा है वो भी हम लोग पीएनएल में शो करेंगे। और जो भी एक्चुअल वाला है वो पूरा ओसीआई में हम लोग को शो करना है, और उसमें भी हमें नेट दिखाना है, ठीक है। जो भी आपका एक्चुअल गेन लॉस है डीबीओ पे एंड जो भी है आपका प्लान एसेट पे, वो हम लोग पूरा नेट, एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लान एसेट पे भी अगर लॉस है तो वो पूरा नेट करके हम लोग को ओसीआई में दिखाना है। ओके, और ओसीआई में अभी आपने रिकॉर्ड किया तो उसके बाद आप पीएनएल में जाके इन फ्यूचर रिक्लासिफाई भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक बार ओसीआई में बुक कर दिया और आपको अगर रिवाइज भी करना है, रिक्लासिफाई भी करना है, तो आप रिटेन्ड अर्निंग में करोगे या तो फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव रिजर्व में करोगे, बट पीएनएल में आप रिक्लासिफाई भी नहीं करोगे ये चीज को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट पॉइंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब हमें चेक करना होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को पूरा एक्चुअल रिपोर्ट देखेंगे, उससे हम अपनी बुक्स को कंपेयर करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियस का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल लाइफ से भी। एंड ठीक है, क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी। From the following particulars, compute the net defined benefit liability and expense to be recognized in profit and loss account. Okay.
तो हमें बताना है कि नेट डिफाइंड लायबिलिटी कितना रिकॉर्ड होगा और कितना एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। ओके, और हमें यहाँ पे ये सारे एक्सपेंसेस दिए हैं, तो देखते हैं। So this is opening balance, then there is a current service cost, interest costs. Okay, so first we will going to calculate the closing liability of defined benefit obligation. So हम लोग पहले 31st दिसंबर का देखते हैं कि 31st दिसंबर का क्लोजिंग कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें ओपनिंग दिया है, फिर दिया है करंट सर्विस कॉस्ट। तो करंट सर्विस कॉस्ट ऐड होगा लाइबिलिटी में, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होगा, फिर चेंजेस इन डेमोग्राफिक अजम्पशन की वजह से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी ऐड होगा। चेंजेस इन फाइनेंशियल अजम्पशन ऐड होगा, फिर एक्सपीरियंस वराइंस, इसकी वजह से भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये ऐड होगा। और भी उसके बाद है बेनिफिट्स पेड, तो हमारी लायबिलिटी उससे डिक्रीज होगी, राइट, तो उसको हम लोग लेस करेंगे। हम इसको लेजर के साथ समझते हैं। So I have made like statement wise, but ledger say be you can do, but it's better to present in a statement wise. Okay, because we present balance sheet also in statement wise. So now it will be better if we are presenting in statement wise than in ledger wise. Okay, so I have plotted opening balance of both the year. Then I have added current service cost, then interest cost, then demographic assumption. Okay, so in both here it is positive. Okay, so it is an expense. So financial assumption, here also it is loss. So here it is a gain, so it will reduce our liability. So then we will get the closing balance of both the year. Okay, सेम वी विल डू फॉर प्लान असेट। प्लान असेट का इतना ओपनिंग दाम, फिर उसमें जो भी एडजस्टमेंट हुए हैं उसको एडजस्ट करके हम उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो देखो ये मैंने लेजर में वही चीजें प्लॉट की है। अभी प्लान असेट ओपनिंग इतना था, लेस पेमेंट ऑफ बेनिफिट, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे करके हमने क्लोजिंग बैलेंस पे ला दिया है इसको। अभी हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो नेट डिफाइंड लायबिलिटी। सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू टेक हम लोग का जितना भी ओरिजिनल लायबिलिटी है, ठीक है, डीबीओ का जितना भी हमें लायबिलिटी आया है वो लेंगे, और फिर हम लोग का जितना भी प्लान असेट है उसको माइनस करेंगे। सो हम अपनी बैलेंस शीट में ये नेट डिफाइंड लायबिलिटी शो करेंगे। अभी कितना एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, पहले तो करंट ईयर का करंट सर्विस कॉस्ट होगा, एंड फिर नेट इंटरेस्ट। हमने देखा था कि हमें नेट इंटरेस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है पीएनएल में भी, मतलब जितना इंटरेस्ट हमने डीबीओ में चार्ज किया है वो लेंगे, और उसमें से जितना हमने रिटर्न कमाया है प्लान असेट में वो इतना रिटर्न मीन्स उतना इंटरेस्ट हम लोग लेस कर देंगे। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस में से उतना हम लोग इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है प्लान असेट में वो हम लोग माइनस करके जो भी नेट इंटरेस्ट आएगा वो फिर हम पीएनएल में चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला अमाउंट आएगा, ये 2.8 और 2.4। ओके, तो इतना टोटल हमारा एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, 2.8 एंड 2.4। ओके, on 1st April 2021, the fair value of the assets of XYZ Limited's defined benefit plan were valued at rupees 20,40,000 and the present value of the defined obligation was 21,25,000। देखो ये 1st अप्रैल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हमें ओपनिंग दिया है डिफाइंड बेनिफिट प्लान का, और डिफाइंड ऑब्लिगेशन का ओपनिंग दिया है। On 31st March, देखो year end पे, the plan received contribution from XYZ Limited amounting to 4,25,000. So now we have made contribution in plan asset. Okay, so ये हम लोग का plan asset का opening है, and now we are making contribution in the plan asset. So we will going to increase our plan asset to up till that contribution amount, and paid out benefits of 2,25,000, and also we are paying benefit from that plan asset, so we will going to reduce that benefit. Okay, so we have reduced this benefit, we have added this contribution, we have subtracted this benefit. Now the current service cost for the financial year ending 31st March 2020
22 is 5,10,000. अभी यहाँ पे देखो DBO का आ गया, because current service cost we will going to charge in DBO account, right? तो हम लोग डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में भी ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस ये था और हमने ये करंट सर्विस कॉस्ट ऐड कर दिया। Interest rate of 5% is to be applied to plan assets and obligation. So दोनों में हम लोग को 5% रेट लेके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्लान असेट में हम लोग को रिटर्न मिलेगा। अभी देखो ये वाला जो भी है ना एडजस्टमेंट, वो ईयर एंड पे हो रहा है। तो हम जो जिस बैलेंस पे जो कंसिडर करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, वो ओपनिंग का होगा। ठीक है, हम लोग 20,40,000 जो ओपनिंग का बैलेंस है, उस पे हम लोग इंटरेस्ट रेट लगा के कैलकुलेट करेंगे, ना कि कंट्रीब्यूशन को ऐड करके, बिकॉज कंट्रीब्यूशन ही हम लोग ईयर एंड पे कर रहे हैं, तो एक दिन का तो ऑब्वियसली हम नहीं कंसीडर करेंगे, राइट? तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसको कंसीडर करके हमें उस पे इंटरेस्ट रेट लगा के उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग का जो इंटरेस्ट इनकम है वो इतना आएगा। ठीक है, प्लान असेट में हम लोग इंटरेस्ट ऐड करेंगे और देखो हमारा क्लोजिंग एज पर बुक्स इतना हमें मिल गया है। अभी सेम इंटरेस्ट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट फॉर अ डीबीओ। नाउ सी इन डीबीओ आल्सो सेम। ओके, हम लोग ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर करेंगे। तो ओपनिंग में है 21,25,000, उसका 5%। अभी यहाँ पे डीबीओ पे हमें इंटरेस्ट ऐड करना होगा, राइट? तो हम लोग इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे बेनिफिट पेड है, तो देखो वो दोनों जगह से लेस होगा ना। एक तो प्लान असेट से भी लेस होगा, बिकॉज प्लान असेट को यूज करके ही हम अपना लायबिलिटी फुलफिल करेंगे, राइट? सो फॉर दैट रीजन वी विल गोइंग टू सब्ट्रैक्ट बेनिफिट पेड फ्रॉम बोथ, फ्रॉम डीबीओ एज वेल एज फ्रॉम प्लान असेट। सो जो हमने बेनिफिट पे किया है वी विल गोइंग टू लेस, okay, because by paying benefit we are reducing our liability, okay? So now we will going to get closing as per DBO also. Then further they have given fair value of the plan asset and the fair value of defined benefit obligation. So now whatever the balance we are getting as per our books and whatever the closing balance which is there as per fair value, we will going to compare that both balance. Okay, if there is more liability as per fair value, then we will going to add that liability, okay, and that will result into actuarial loss. जैसे यहाँ पे DBO का जो है closing fair value वो कितना है, 27,20,000, ठीक है, और हमारे हिसाब से 24,86,000 ही है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, इसकी वजह से हमारा एक्चुअल लॉस हो गया। अभी प्लान असेट का फेयर वैल्यू कितना है, 23,80,000, और हमारे क्लोजिंग के हिसाब से कितना आ रहा है प्लान असेट, 23,12,000। तो यहाँ पे हम लोग का देखो गेन हो गया, बिकॉज ये असेट है ना, हमें चांस मिल रहा है अपने असेट को ज्यादा अमाउंट पे दिखाने का। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक्चुअल गेन हो रहा है। अभी इसको बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे वो देखेंगे। पहले तो नेट लायबिलिटी डीबीओ का जो क्लोजिंग बैलेंस है फेयर वैल्यू वाला वो, ठीक है, और प्लान असेट का जो, उसको लेस करके हम लोग नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी शो करेंगे बैलेंस शीट में। फिर आता है कि नेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन पीएनएल। सो पीएनएल में क्या क्या जाएगा, करंट ईयर का करंट सर्विस कॉस्ट, फिर इंटरेस्ट अमाउंट भी नेट जाएगा। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट डीबीओ पे है माइनस जितना हमने अर्न किया है प्लान एसेट से, वो लेस होके पीएनएल में जाएगा। और ओसीआई भी हमें नेट पे दिखाना है। ठीक है, जो भी हमारा गेन हुआ है प्लान एसेट में माइनस एक्चुअल लॉस ऑन डीबीओ, जितना भी नेट लॉस हुआ है वही हम लोग ओसीआई रिजर्व ओसीआई के अंदर भी शो करेंगे। ठीक है, RK Private Limited is an old company established in 1999. The company started with very small capital base and today it is one of the leading companies in India in its industry. The company has annual turnover of rupees 11,000 crores and planning to get listed in the next year.
The company has a large employee base. The company provided a defined benefit plan to its employees. Following is the information relating to the balances of the fund's assets and the liabilities as at 1st April 2021 and 31st March 2022. So here they have given us the balances which are there as on 1st April and on the 31st March 2022. Present value of benefit obligation. Okay, so they have given balances of present value of benefit obligation and the plan assets. For the financial year ended 31st March 2022, service cost was rupees 55 lakhs. तो इतने अमाउंट का हम लोग का सर्विस कॉस्ट था. ओके, मतलब करंट सर्विस कॉस्ट जो हम ऐड करते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में, तो वो करंट ईयर का था 55 lakhs. द कंपनी मेड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एन अमाउंट ऑफ 111 lakhs टू द प्लान. तो इतने अमाउंट का हमने कंट्रीब्यूशन किया प्लान में. ओके, नो बेनिफिट्स वेर पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो हमने कोई भी बेनिफिट पे नहीं किया है. Consider discount rate of 8%. So this is our discount rate in basically the interest rate. By using this rate, we will going to calculate the interest for DBO and also for the plan asset. Compute the balances of the company to be included in the balance sheet. Okay, so we have to calculate ki what will be the balance of DBO and what will be the balance of DBO and plan asset as on 31st March 2022, and the amount to be recognized in P&L and other comprehensive income for the year ended 31st March 2022. And also, the new thing in this question is that we also have to pass the journal entries. Okay, so okay, reconciliation of plan asset. Opening balance. Okay, so opening balance I have already given in the question. It is 1400. So we will going to plot opening balance. Then there is expense interest income. Okay, so in plan asset we will going to earn interest, right? So we will going to calculate interest on the opening balance. Okay, so this much amount is the interest in a plan asset. Then contribution. So here they have mentioned that this much amount is being contributed in plan. So we will going to add that contribution in plan asset. Okay. So here one of the important thing is that we will going to calculate interest on the opening balance, because the contribution which is being made, it is being made in the end of the year. Okay. So we will not consider the contribution for calculating interest, but we will only going to consider opening balance. Okay, I have also written I have noted here also, so you people can also mark it. So after considering all these balances, we have got closing balance. Now we will going to compare this closing balance with the closing balance which is being given in the question. Okay, so we will so we will going to compare with this closing balance. Okay, so in question it is 1275. C. According to our books, it is 1342, and as per fair value, it is 1275. So we have now we need to decrease our asset value. Okay, so because of that, it is our actuarial loss, and this we will going to record in OCI. Now reconciliation of DBO. So in DBO also, what is our opening balance as per the question? This is our opening balance. Okay, then we will going to add interest cost. Same in DBO also, we will going to consider opening balance for calculating interest. Okay, so we will going to add interest and then current service cost, which is already being given in the question. Okay, so we will going to add current service cost, and we will going to then we will get closing balance. We will compare this closing balance with the question, and then here also we are getting actuarial loss. Okay, now in balance sheet we have to show define liability, right? Net defined liability we need to show in a balance sheet. Okay, so for that reason, we will take closing balance of DBO, then less closing balance of plan asset, we will get our net defined liability.
नेट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन पीएनएल, सो पीएनएल में भी कितना जाएगा, नेट जाएगा, ठीक है। तो करंट सर्विस कॉस्ट एक तो जाएगा पीएनएल में और नेट इंटरेस्ट जाएगा, तो जितना भी इंटरेस्ट हमने ये अर्न किया है प्लान असेट में माइनस जितना इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है डीबीओ में, तो उसको लेस करके हम नेट इंटरेस्ट ही रिकॉर्ड करेंगे। देन हम लोग ओसीआई में भी नेट वैल्यू ही प्रेजेंट करेंगे, ओके। और ये केस में तो दोनों में लॉस है, तो दोनों का लॉस एक साथ प्रेजेंट करेंगे ओसीआई में, लाइक नेट रीमेजरमेंट लॉस। देन विल डिस्कस जर्नल एंट्रीज, ये तो वेरी इजी, ये तो बहुत इजी है। इंटरेस्ट ऐड करना है डीबीओ में, करंट सर्विस कॉस्ट ऐड करना है, देन देयर इज एक्चुअल लॉस, सो वी विल गोइंग टू ऐड दिस आल्सो इन डीबीओ। सेम इन अ प्लान असेट, प्लान असेट में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हमने ये कंट्रीब्यूशन किया है प्लान एसेट में और हम लोग का लॉस हो गया है, तो वो भी हम लोग प्लान एसेट में चार्ज करेंगे, एंड दिस इज द कंबाइंड एंट्री, वी कैन आल्सो पास दिस, ओके। A Limited prepares its financial statement to 31st March each year. It operates a defined benefit retirement benefit plan on behalf of current and former employees. Okay? वो मतलब डिफाइंड बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान अपना बनाते हैं अपने जो भी करंट और या तो जो भी एम्प्लॉयज जो छोड़ के गए हैं उनके लिए। A Limited receives advice from the actuaries regarding contribution levels and overall liability of the plan to pay benefits. Okay, so A Limited gets all the information from the actuaries, and then on 1st April 2021, the actuaries advised that the present value of the defined benefit obligation was 6 crore. Okay, so as per actuaries, this was the opening balance. On the same date, the fair value of the assets of the defined benefit plan was 5 crore 20 lakhs. So this is the fair value of this is fair value of DBO, and this is the fair value of plan asset. On 1st April 2021, the annual market yield on government bond was 5%. So here they have given this rate for calculating interest. Okay, we will going to calculate interest by considering this rate. During the year ended 31st March 2022, A Limited made contribution of rupees 70 lakhs into the plan, and the plan paid out benefits of rupees 42 lakh to retired member. Both these payments were made on 31st March 2022. So here see, this much contribution was made in a plan asset and this much was withdrawn from plan asset, and this both is being happened on 31st March 2022. So we will only going to consider opening balance for calculating interest, but will not going to consider the contribution because it is being made on year end. Okay, it is the contribution was made on 31st March. The actuaries advised that a current service cost for the year ended 31st March 2022 was 62 lakhs. So this is our current service cost. On 20th Feb, the rules of the plan were amended with retrospective effect. These amendments meant that present value of the defined benefit obligation was increased by 15 lakh from that date. So because of changes in the amendment, because of the changes in the rules, okay, so there is increase in defined benefit obligation. So we will going to consider this as a past service cost. Okay. During the year ended 31st March 2022, A Limited was in negotiation with an employee representative regarding plan redundancy. Now management want to reduce the plan and they have negotiated same with the employee. The negotiation were completed shortly before the year end and redundancy packages were agreed. The impact of this redundancy was to reduce the present value of defined benefit obligation by 80 lakh. So management and employee decided कि their defined benefit plan will going to reduce by 80 lakh. Before 31st March 2022, A Limited made a payment of 75 lakhs to the employees affected by the redundancy in compensation for curtailment of their benefits. These payments were made out of the assets of the retirement benefit plan. Obviously,
हमारा जो प्लान असेट है उसे ही हम लोग पे करेंगे हम लोग का डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ओके, सो हियर हम लोग का प्लान हुआ था कि हम लोग 80 लाख का रिड्यूस करेंगे, बट हमने उनको पेमेंट 75 lakhs का किया है। ओके, on 31st March 2020 the actuary advised that the present value of defined benefit obligation, okay, तो यहाँ पे actuaries के हिसाब से closing balance दिया है। Now let's see the answer step by step. So first we're going to reconcile plan asset. So our opening balance is, this has been given in a question. This is the interest, this was the contribution which was made, this was the benefits which was paid. ये starting of the question में ही है यहाँ पे। ओके, तो प्लान असेट तो हमारा इजी है, हो जाएगा। और हम लोग ने इतना पे किया है बिकॉज ऑफ कर्टेलमेंट, हमने इतना पेमेंट एम्प्लॉयज को किया है फ्रॉम द रिटायर बेनिफिट प्लान। ओके, सो वी विल ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस दैट बेनिफिट्स which we have given to the employee. Then we will get closing balance. We'll going to compare this closing balance with the actuary's closing balance, and then we'll get actuarial gain या तो actuarial loss. Here we are getting gain. Then now we will going to reconcile DBO. Same, they have given DBO opening balance, interest cost, benefits paid. We will going to add past service cost, and यहाँ पे curtailment हम लोग 80 लाख का हम लोग रिड्यूस करेंगे बिकॉज हमारा एम्प्लॉय से बात हुआ है, नेगोशिएशन हुआ है, डिसाइड हुआ है कि हम उनको उनका मतलब हम उनका जो बेनिफिट प्लान है वो 80 लाख से कम कर रहे हैं, तो हमारा जो डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी है वो हम लोग 80 लाख से कम करेंगे। फिर हम नेट डिफाइंड लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ एंड नेट प्लान असेट्स, net interest cost we will going to calculate here. Okay, the interest cost which is there on DBO less whatever the interest income we are getting on a plan asset, net we will going to show as an interest cost. Then there is net employee benefit in PNL account. Okay, so हम लोग का पूरा employee benefit expense कितना show होगा PNL में? So पहले तो current service cost, then net interest cost, then past service cost we're going to add, and then less gain on settlement. So here we are also getting gain because हमारी liability थी 80 lakh की, but हमने पे किया है 75 lakh, so 5 lakh का हमारा gain है। Okay, so this much is a net employee benefit expense that we will going to charge in PNL. Then net expense which we will going to show in OCI. Okay, so here we are getting gain on plan asset minus actuarial loss we are getting on defined benefit obligation, and this is our net remeasurement loss that we will going to show in OCI. SA Private Limited is a subsidiary of SAG Limited. SAG Limited is listed on National Stock Exchange in India. Following information is available for SA Private Limited. Plan assets. At 1st April 2021, the fair value of the plan assets was 10,000. Okay, so this was the opening balance. Contribution to the plan asset was made on 31st March. Okay, so we'll not consider this contribution for calculation of interest. Then amount paid. So we have utilized this much plan asset. At 31st March, the fair value of the plan asset was this much. Actual return on the plan asset. Now what is actual return on the plan asset? Whatever return we are getting on a plan asset. So what return we are getting? First is interest income and second is actuarial gain. Okay, so वो दोनों को मिला के will say actual return on the plan assets. Okay, so this 2000 includes both the income, interest income plus actuarial gain wala income. Then defined benefit obligation. At 1st April 2021, present value of the defined benefit obligation was 12,000. So this is the opening balance of DBO. At 31st March 2022, present value of defined benefit obligation was 15,500. So this is the closing balance. Actuarial losses on the obligation for the year ended 31st March 2021 were
100. So this is actuarial loss for DBO. Current service cost is 2,500. Benefits paid 300. Discount rate used to calculate defined benefit liability is 10%. As per Ind AS 19, please suggest if there is any amount based on the above mentioned information. So now first in examination, if we'll get any type of question, first we have to read question thoroughly, and then we have to understand कि what is the actual requirement of the question. अभी यहाँ पे जैसे मैं रीड कर रही थी ना, तो मैं दिमाग में ऐसा सोच रही थी कि चलो ये ओपनिंग है, कंट्रीब्यूशन है, तो हम ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे. बट इफ यू विल सी ना रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने बोला है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना अमाउंट जाएगा और नेट इंटरेस्ट इनकम कितना रिकॉर्ड होगा. तो अभी हमें वो पर्सपेक्टिव से सोचना है कि हमें ये फिगर्स कैसे मिलेंगे. ओके, सो विल स्टार्ट विद एन इंटरेस्ट. सो अभी देखो नेट इंटरेस्ट तो हमें यहाँ से ही मिल जाएगा. जो प्लानर साइड का जो ओपनिंग है उसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 10,000 का 10% लेके. डीबीओ का कैसे होगा, उसमें भी ओपनिंग पे ही होगा, 12,000 का हम लोग 10% ले लेंगे. देखो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट का तो फिगर ऐसे ही मिल गया क्वेश्चन रीड करके ही, नेट इंटरेस्ट. ओके, जो हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा. अभी हमारा दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. क्या जाता है हम लोग का, एक तो एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस जाता है, और वो भी नेट होके जाता है. ठीक है, तो अभी वो हमें कैसे मिलेगा. अभी देखो ये वाला अभी हमें डीबीओ का तो यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है उन्होंने कि ऑन डीबीओ वी आर मेकिंग एक्चुअल लॉस. ओके, बट अभी प्लान असेट का हमें फाइंड करना है कि एक्चुअल गेन लॉस कितना होगा. ठीक है, उस वो कैसे करेंगे हम लोग. जैसे मैंने बोला कि एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान असेट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम प्लस एक्चुअल गेन. ये हमें टोटल रिटर्न तो दिया है क्वेश्चन में, हमने इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 1200 का. जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा ऑन प्लान असेट. ओके, उसके बाद नेट रीमेजरमेंट भी हमें मिल जाएगा. ठीक है, वी गॉट एक्चुअल गेन ऑन अ प्लान असेट 1000 का, और हम लोग का एक्चुअल लॉस जो था वो था हम लोग का 100 का. तो हम लोग का नेट 900 रुपीज जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में. 1st April 2020, the fair value of the plan assets was 10 lakh. The plan paid benefits of 1,90,000 and received contribution of rupees 4,90,000 on 30th September 2020. This is the opening balance of the plan asset. This much benefit was paid from the plan asset, and this much is the contribution which was made. But here see, contribution was made on 30th September 2020. Okay, after 6 months we are making contribution. We will also have to calculate interest on this contribution and also on the opening balance. The company computes a fair value of the plan asset to be 15 lakh as on 31st March 2021. They have given the closing balance fair value of the plan asset, and the present value of the defined benefit obligation amounts to 14,79,200. They have given fair value of both plan asset and also defined benefit obligation fair value. Actuarial loss on the defined benefit obligation were 6,000. They have also given actuarial loss on defined benefit obligation which is 6,000. Compounding happens half yearly. जो भी हमारा बैलेंस है ना, उस पे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगा. ठीक है, इंटरेस्ट को भी फिर बैलेंस में ऐड करके फिर नेक्स्ट हाफ ईयर एंड में इंटरेस्ट विद ओपनिंग बैलेंस पूरा ऐड करके उस पे फिर इंटरेस्ट ऐड करेंगे. ठीक है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट. तो उनका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग से इनकर हो रहा है. ठीक है, तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट फॉर 6 months पीरियड इज 10%. नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कितना है 6 months का, 10%. while the effective interest rate for 12 months period based on the following. 6 month का 10%. अगर आपको 12 month का कंसीडर करना है तो उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया है. ठीक है, तो ये हम लोग एएफएम में पढ़ेंगे ये इन डिटेल, और यहाँ पे तो हम लोग को डायरेक्टली दे दिया है कि अगर आपको 12 मंथ का इंटरेस्ट रेट कंसीडर करना है तो आप ये वाला करोगे.
और अगर आपको 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो 10% लोगे। अभी what we have to calculate in the question is that कि what will be the actual return and expected return on the plan asset, also compute amount to be recognized in other comprehensive income. Okay, कैसे करेंगे अभी? फर्स्ट विल गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। अभी सी ओपनिंग बैलेंस जो है उसमें तो 12 मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंसीडर करके हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 10 लाख पे हम लोग 10.25% वाला रेट लेंगे ऑन नेट कंट्रीब्यूशन। अभी देखो एज ऑन 30th सितंबर हम लोग ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें से हम लोग ने इतना बेनिफिट भी पे किया है, तो जो नेट बैलेंस बचेगा ना उस पे हम लोग 10% का चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। ओके, 6 मंथ का हम लोग चार्ज करेंगे, तो हम लोग का 6 मंथ का इतना इंटरेस्ट होगा। सो दिस इज आवर टोटल इंटरेस्ट ऑन अ प्लान असेट। Now we will now we will going to calculate actual gain or actual loss in the plan asset. So यहाँ पे opening balance we got it from the question, contribution less benefit, expected interest income we had calculated over here, and then we got the closing balance as per books, and then we're going to compare this closing balance with the fair value, and then we will going to get actual gain. How will the following information be presented in the balance sheet of Udyog Limited? Present value of defined benefit obligation 2750. Fair value of the plan asset is 2975. So here see we are getting net defined asset because our asset is more than our liability. Okay. So we will going to show it as a net defined asset. But see, our asset ceiling is of 175 lakhs. तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इन द नेम ऑफ प्लान असेट वो मेरा है 2975। ओके, बट मैं उसको विड्रॉ सिर्फ 175 ही कर सकती हूँ। इफ टुडे आई वांट टू विड्रॉ माय इन्वेस्टमेंट आई कैन ओनली विड्रॉ अप टिल 175। तो मैं विड्रॉ ही 175 तक का कर सकती हूँ। देन व्हाई टू शो नेट डिफाइंड असेट ऑफ 225? सो वी शो इट as a lower of net asset or asset ceiling, whichever is lower, we show that as a defined benefit asset. Okay, so in any case if there is asset ceiling, then we will going to take lower of net defined asset or asset ceiling. Okay, whichever is lower we will going to consider there, and on that amount we will going to show it our net defined benefit asset. PVC Limited operates defined benefit plan which provides to employees covered under a plan a pension benefit which equals to 0.75% final salary for each year of the completed services. Okay, तो आपको 0.75% मिलेगा फाइनल सैलरी का। An employee needs to complete minimum of 5 years service for becoming eligible to the benefit. Okay, on 1st April 2015 the entity improves a pension benefit to 1% of the final salary for each year of service. तो उनका rate increase हो गया। Okay, so now there is change in a rate estimation, so because of that it will lead to past service cost. The present value of defined, or because of changing in estimation, now defined benefit obligation is increased by 80 million. And then below they have given bifurcation कि employees who have completed more than 5 years उनका 60 million से increase हुआ है, और the employees who have completed less than 5 years उनका 20 million से increase हुआ है। The employee is in the second category have completed average 2.5 years. Okay, उन्होंने 2.5 years complete किए, 2.5 years अभी complete करना बाकी है। Comment on the treatment of rupees 80 million of the defined benefit obligation in financial statement both as per AS 15 and Ind AS 19. So this question is not that much important for upcoming attempts, but still I have considered this because from this question we can easily understand the difference between the accounting treatment which is being suggested by AS 15 and the accounting treatment which is being suggested by Ind AS 19. So let's understand with the solution. So under AS 15
पास सर्विस कॉस्ट ऑफ 60 मिलियन नीड टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। तो उनके हिसाब से क्या है कि देखो हमारा जो एस्टिमेशन है ना वो करेंट पीरियड में चेंज हुआ है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो ये एम्प्लॉयज ने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, एंड ये एलिजिबल है ये बेनिफिट का, ये लोग मतलब एलिजिबल है बेनिफिट के लिए। तो 60 मिलियन जो है वो अभी पूरा रिकॉग्नाइज कर लो, बट ये जो 20 मिलियन है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। मींस इन्होंने 2.5 इयर्स अभी कंप्लीट किया है, उतने परसेंटेज का हम अभी रिकॉर्ड करेंगे, बाद में हम फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे। बट इंडियस 19 क्या बोलता है कि जितना भी है 80 मिलियन का पास सर्विस कॉस्ट वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होना चाहिए पीएनएल में। बिकॉज इंडियस का क्या मानना है कि ये जो पास सर्विस कॉस्ट है वो क्यों अराइज हुआ है, बिकॉज ऑफ चेंज इन एस्टिमेशन, और ये जो चेंज इन एस्टिमेशन जो हुआ है वो करंट ईयर में हुआ है, ठीक है, उसका कुछ लेना देना नहीं है आगे के पीरियड से, ठीक है। ये इससे कुछ हमारा लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं होने वाला है, ओके। ये हमारा चेंज इन एस्टिमेशन की वजह से अराइज हुआ है, वो करंट पीरियड में हुआ है, तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है वो भी करंट पीरियड में ही रिकॉर्ड होंगे, ओके।